8 থেকে
Hi guys, hi, hello. ठीक है, थैंक यू। ठीक है यार, स्टार्ट करते हैं। यार आवाज आ रही है तुम लोग को? ठीक है, ऑडियो वीडियो ऑल गुड। चलिए स्टार्ट कर रहा हूँ जो 1 मिनट दे दो बस। लीव इट। ठीक है यार, म्यूट कर दे रहा हूँ। आई म्यूट एवरीवन। अपन क्या पढ़ रहे थे कल? CD front end. Sir, make this chat as private only for you. Chats to private only. Okay, fine. Don't worry. This will as soon as I start the class, this all things will vanish. Don't worry. ठीक है यार, MKDIR D4 ठीक है। We started multimedia, right? We started multimedia, if I'm right. So I think I discussed some of the image tags, right? Some of the image tags I discussed in the previous class. So let's start from the image only. We'll start with the image and I'll discuss the entire image thing, and then we can, just because if I remember it well, we discussed a little bit of image, and then there were some network issues or some connectivity issues. Okay. Okay, fine. So this day 3, day 4, index.html. Okay. Let's start multimedia.
multimedia. The document is multimedia. And then we'll start with the image tag. All about images. About GBS images. Cool. Look, it's a very simple. Like you, I think rather than explaining this, it would be more better if we'll start doing it and start looking at the results and all. See what the multimedia or image tag has to do. So let's start. This is our document. Okay. So maybe I will put a H1 H2 or something like that. Today we will learn about multimedia. Okay. Apply front end in package semester. I apply for front end in my fifth semester of third year. Priyanshu, I didn't get your question, but like you can always do it. Front end has nothing to do with the exams or semesters and all. If your exams, if you have a subject, like I remember in my maybe third year, in fifth, I too had a subject called web development or web technologies. There I had to use some front end. So yeah, you can always use. There is no harm in that. There is nothing wrong with that. You can always use. So let's see. Today we'll learn multimedia. Start with images. And just to make it a little simple, I'll put this and into D4. Yes, and into D4. Yeah, cool. And I had iPad. Cool. So just use image tag, img tag. Okay. Yeah, you can. Oh, front end. You mean to say front end job? Yeah, you can. So see, I'll just use this iPhone. Okay. There is the now when you can see whenever I'll use an image, it will just I have just used the reference, the address of the image. I have just used the address of the image tag. Okay. I've just used the address of the image tag. This is in my same location. So I'm just using the address or the links, whatever you can say. This is something the alternate that we put, though I have said this in the previous class, but I'll say it again. If we use alternate means simply means suppose where is the pen? Where is the pen? I shall leave it. If this is the image, okay, and it by some mean, because it is not always that you will use that image in your local file. You are taking it from any website. Okay, maybe you are taking my LinkedIn photo and try to put that. Okay, in some case maybe that image is not the website or the HTML page couldn't find that image. In that case, this text will be shown. The name is very simple, alternate. So this is an image tag. Okay, sorry, this is an iPhone. This is an iPhone. PHONE. This is an iPhone. For now, it will not make you sense, but let's do this. Now, can you see? Because there is no such file name like this. So in that place, and this is something that you have already seen in your like day-to-day life. Sometimes your pictures on Amazon don't render. Sometimes your profile picture or someone else's profile picture doesn't load on time. In that case, this image is shown, isn't it? So yeah, now you can see like it is not fitting. It is not fitting. At the same time, you can also give its width. Maybe I would say 150 pixels. Good.
And you can also give its height, HEIG height. That is maybe key, I would keep it at 200 pixels. Yeah, so 180 pixel would be good pixels. Yeah, so this is certainly an image. Let me see what do we have in the table content. Okay, yeah, and then miss title hovering over. Yeah, we have one more thing. We have one more thing here. Title. Title is basically something. Suppose ki IPHONE iPhone. IPHONE iPhone 14, recent one. It will, you know what this title will do? It will just whenever I'll hover over this picture. Dikha ja bhai. So you didn't attend the alternate image there instead of there is. यार ये दिख जा. Did I do something wrong? Okay, yeah. Now you can see whenever I'll hover over the image, whenever I will hover over the image, whenever I'll hover over the image, it will show me. Hello. नहीं नहीं मैंने ऑनलाइन पे कर दिया है उसका बस वो दे दो हॉस्पिटल पहुंच गए तुम लोग हाँ हाँ उनको उतना दे दो और जैसे ही डॉक्टर जो भी बताता है बताना जल्दी ठीक है जल्द और व्हाट्सएप कॉल करना ठीक है नॉर्मल कॉल मत करना अरे व्हाट्सएप कॉल करना नॉर्मल कॉल मत करना ठीक है तो देखो let's see just see here okay whenever I'll hover over here this alternate tag text will show whatever we are writing here okay can you all hear me can you all hear me can you all hear me okay ठीक है okay fine then we have the next thing yeah one more thing for this thing I have to first upload multiple images then only I'll be able to showcase what the use of that okay so let's add a few other images in source maybe I'll add iPad okay and this would be an this is an iPad okay and maybe width I'll give 150 pixels I'll give height GHT height equal 150 pixels okay here we have for this I have to use a BR tag to come across come down line and then I'll maybe use another MacBook image not I tag img image tag source is Mac okay and then I'll show this is a MacBook cool and maybe I'll give width WID
width width equal 150 pixels. Okay, and then height will be equal to 150 pixels. Why it is not taking? Yeah, it did a break tag. Cool. The thing that I have to do is ki, while there is one more tag, that is loading, LOA, loading equal lazy. I'm sure lazy. ठीक है? So loading equal AZY. Let me just verify it. मेरे को दिख नहीं रहा था ये. Image LOAD loading. Image loading at image alternate style width. Yeah, ठीक है. तो देखो, this tag generally people don't use this tag loading and all, and like these are sometimes something called I say ki intermediate or advanced level concepts that are not generally discussed, but there is a very fine difference between this tag. आपको ऐसा कुछ दिख नहीं रहा होगा right now. Even if I just remove this, there is no change right now, and if I add, there is no change that you can see. Okay, but there is a very big change that you can see right now. If I'll show you, for that I'll just have to do this BR into 500. Okay, BR into 500. Okay, so देखो, what does it do ना? Right now you can see ठीक है, या सी देखो, ध्यान से देखना इसका ना, मतलब I'll show you the exact demo of how these things are working. Okay, so now I have a very long page. Now what I've done via using loading lazy now, this page, this image, and for that I'll take this entire page. Okay, right now all the images, whenever I will load, for that just go and see in the inspect. In the inspect section, I'll go on the networks. Okay, and let me just go. There is an image tag. Okay, there is an image tag. The moment I refresh, yeah, acha. Again, I have to make this. I'll have to remove this one. First, पहले ये देखो कि क्या हो रहा है. सर मैंने तो NSP से 10 बार लिखा था, वो क्या मैं VNSP into 100 कर सकता? Yes, Yuvraj, you can do that. ठीक है जी. Can you see in the image section? All the 3 images has been loaded. Everyone can you see? I'll show you this once again. I'll refresh the page and I'll go on the inspect section. मैं इधर अभी अगर इसके बारे में आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा तो don't worry much about it. ठीक है, we'll be learning this console and browser section in much more detail. ठीक है, I'm going in the image section. I'll just refresh the page. Can you see all the images has been loaded? Yes, right. Basically, right now I have not seen the other previous images also. These are so down. These are so here. I don't need that right now. Okay. Right now you can see it. We have just used 3 images. Maybe on Amazon.com. Again, my favorite website for teaching, Amazon.com. There are hundreds and thousands of images, isn't it? All the images if start loading at the once, maybe because when we are using this just two images, it won't see that you won't be able to see the difference. But when there will be thousands images, it will be a big difference. Now देखो loading lazy से होता क्या है? What loading lazy will do?
if I'll just put loading lazy here and loading lazy here also, okay? Let me refresh. Can you see only one images has been loaded as of now? देखो ध्यान से देखो और just observe, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है? The moment iPad is coming, the moment iPad is coming, the iPad picture has been loaded. As of now, MacBook picture has not been loaded yet. MacBook picture has not been loaded yet as of now. Okay. Now MacBook, when MacBook came, it is now that picture is loaded. Okay. So basically, browser will download. देखो basically हो क्या रहा है ना? If you just go, you can see these images and all those things. So browser will only load that image when it requires, when user want to. Suppose I have a very long web page, ठीक है, and a user is coming and he just want to visit the first page only, ठीक है, or the first few sections, maybe I would say the first few sections of the web page he or she wants to visit. And for that, what is the use? What is the use of loading all the images? Main value or sir, what is main use of this? Main use of this is to improve the website performance. It will improve the website performance. It will not, it will how to say this, like latency would not be the right word to use, but like website performance is being improved a lot. Yeah, you can say the speed of the website. Just give me 1 second, just give me 1 second, guys. Okay, fine. Have you all understood this? There is a load. Yes, sir, and it makes perhaps more if it makes more efficient. Yes, Ria. Yes, you're right. Yes, you're right. Yes, you're right. Just give me 1 second. Dr. Miller, Dr. Miller, क्या बोला भाई? चलो ठीक है, जैसे जो भी होता है बताओ, जल्दी बताओ. ठीक है जी. The by default, there is one more thing. Sometime eager, eager. Eager is the by default. If you don't put lazy, like if the by default would be eager. Eager will simply make it like no matter. Let's see. ठीक है, यहाँ पर देखो ऊपर वाला by default eager है. ठीक है, ऊपर वाले में I have not put anything. Now if I just rephrase this, अच्छा, here it is. Here is this one. Here is this one. So still I am not at the iPad menu. iPad will certainly load. Now, what is the use of the eager? There is also a use of the eager. In some cases, now you don't want to take any risk. ठीक है? You want कि जैसे website open हो जाता है, ठीक है? Maybe on the day of your sales, like Flipkart when it buys a sales day, okay, and that day he have a very small duration of time. In that time he, ठीक है, in that time the Flipkart wants कि ठीक है यार, I don't want to take that risk, ठीक है, all users should be able to see all the images, ठीक है, there should not be rendering time and all those things. In that case this will be used. Eager is used for ads, right? Yeah, ads and all those things where you don't want to play with the images. You want कि ठीक है, जैसे ही हो रहा है, I want to show the images and all. In that case this image is shown. Okay, ठीक है. This is all done. There is one more type. There is one more thing about the images. There is one more type thing about the images. यार ये क्या हो गया?
ठीक है, ये बी आर ना मैं हटा देता हूँ, मतलब इट्स नॉट लुकिंग गुड, इट्स नॉट लुकिंग गुड. In case you all must be interested in what it is, how this is being done, तो एक बार ध्यान दे लो इसको करके. If you do 150 it won't work. ठीक है, if you do 150 it won't work. You have to just write and do this. Suppose 10, here it will be 10. ठीक है, someone was used ampersand NBSP into 10. ठीक है, हो गया. NBSP कुछ और था यार, क्या था स्पेस देने का सिंबल, आई फॉरगॉट. What was the symbol of space? NBSP only, na? Why it is showing like that? NBSP into 10. ये ऐसा क्यों शो कर रहा है? NBSP, there is a NBSP tag also, attribute also. अच्छा ठीक है यार, देख के बता दूंगा. One more thing in the image tag that you कौन था? ठीक है, चला गया दिन অন্যটা লাগিয়ে দিন. ঠিক আছে, সেটাই লাগিয়ে দিন. সেমিকোলন স্যার. अच्छा ठीक है यार, ठीक है. Then I have one more element called FIG figure. ठीक है, देखो एक और एट्रीब्यूट होता है, एक और सेक्शन टाइप का होता है, समथिंग कॉल्ड फिगर. In this now you just can put your image, or maybe I'll put this particular part. ठीक है, this particular image in this, right? And where do I have that I was playing? ठीक है, and here it is. Cool. Please tell about loading once again. Priyanshu, give me 5 minutes. ठीक है, I'll just explain this topic and अभी बता रहा हूँ सिद्धू. I'm telling this. अब just be patient यार, अभी तो मैंने लिखा ही है, अभी तो I've just written it. ठीक है, ठीक है. तो देखो what figure does कि it just, can you see this, it is now giving some border area also, but actually इसका title ये नहीं है. There is something different, that is fig caption. Okay, fig caption you can just provide this is an MacBook. ठीक है, it provide a caption to the image. And for that you have to provide, put in image into a figure tag. This is the figure attribute or tag, you can say. You have, if you put inside, and you can use a fig caption option, and it will just, can you see how beautifully it is putting away? It shows that this is the caption. ठीक है, here I feel like sometime now, as I was saying the same thing yesterday also, there are certain things like this is something visual. ठीक है, you can see using a figure tag and a figure caption, what it is, you can see the, if you just put this image like something that is outside here, you can maybe put right here text something. This is a break, after a break line, maybe after a break line.
this is an iPad. ठीक है, this is an iPad. But in case for some reasons, let's say for some reasons, this image is being shifted this side. ठीक है, maybe कि I would use here NBSP, ampersand NBSP. Okay, ampersand NBSP. ठीक है, if I'm then my this यार एक NBSP में आपको दिखा नहीं होगा सही से, यार NBSP पे शायद ये काम नहीं कर रहा है। ठीक है, यार प्रियांशु इसका मतलब होता है, NBSP का मतलब होता है यार नॉन रिपीटिंग, फुल फॉर्म देख लेना गूगल पे, या मैं ही देख के बता देता हूँ अभी। NBSP it is basically used to give space, non-breaking space, and NBSP है ना, non-breaking space, yes, non-breaking space। ठीक है, याद आ गया। ठीक है, now you can see the use of the fig caption. You can see the use of the fig caption. Basically what it is doing is it will provide a caption to that. No matter if you shift anywhere the image, your caption will always be like at the bottom of that, and it will be, how to use that, it will be symmetrical और थोड़ा सा दिखेगा सही से। ठीक है, no matter like this कि इसका image थोड़ा सा इधर जैसे इधर shift हुआ, the text is still there, the text is not shifting. For that you have to again shift the text separately. If we add more words in fig caption, then that will be displayed on the same line. Just let's see, I'm pretty sure yeah, it will be on the same line, ठीक है। Okay, quick check, is this clear to everyone till now? $30. Okay. Acha, one more check. Is there a network issue for everyone? Like my voice, audio or video issue with everyone? Okay, cool. So Yuvraj, it could be. Oh, your network is unstable. Yuvraj, like I have discussed all about images. After you, if you have not seen it properly, you have missed about the images. Then we will just move to the. अच्छा ठीक है, एक और चीज fig caption के बारे में ना बहुत मस्त चीज है। ठीक है, fig caption is only not about images. ठीक है, this figure tag, let's see how this will work. FI figure, okay, and maybe you can use a paragraph tag. This is a this is a paragraph, okay. और यार करता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा Ctrl+C, Ctrl+V, BR, Ctrl+V, ठीक है, कुछ भी रैंडम टेक्स्ट लिख दिया, मतलब दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। मतलब वो मिर्जापुर का डायलॉग सुना है तुम लोगों ने,
x है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा लड़का है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समथिंग लाइक दैट. Caption, this is all about figure. Can use the ISM. यार लिखना इतना नहीं था प्रियांशु, ठीक है, क्लास का डेकोरम मेंटेन करके रखते हैं. You can use Orium ISM. ठीक है, तो देखो स्टिल थोड़ा सा मैं इधर BR into 10 कर देता हूँ. तो या you can see I can also use some paragraph or something, anything inside the figure tag, and I can give a caption about that also. ठीक है, so if you will just go and inspect this, to inspect that this idea will be. यार guys, can I get 2 minutes? मैं ही तुम लोगों से परमिशन मांग लेता हूँ. Can I just get 2 minutes? ठीक है, चलो 2 मिनट दे दो मेरे को, 2 मिनट बस दे दो, 2 मिनट दे दो. ठीक है, थैंक यू. कूल. ठीक है यार, तो ये रहा ऑल अबाउट इमेजेस. So you can just play around. There are still, like in web development, in HTML, or you can say in the entire web development section, there is no end of anything. You can always play around, and more we will learn the CSS. The more we will learn when we learn CSS, we'll learn to play around more with it. Okay. For now, this is all. So if you have any question till this point, you can ask me. I'm open to the questions now. ठीक है Rivraj, you can do that.
ठीक है. Yeah, sure. This is all. This is all. This is all the code of this. This is all the code of this. Line 36 पे हम दिखा सकते हैं figure tab का. Why we are not able to get the code from the class. अच्छा ठीक है, इसका करता हूँ. Project give me some tips and hints. Can tuition line 36 repeat करिए sir. Line 36 36 36 36. यार देखो figure tag है ना. Okay. Figure tag is all about just like adding a little bit beauty and all. Okay, not beauty, even beauty would not be a right word. Just placing or adding a caption to the image. Okay, you have an image. The title, that was something that we were using for hovering. Okay, when we were hovering. Now you want an image, you want to provide a caption. So all you can see in a figure tag, you can use something. Acha, this time you are asking. This is not always necessarily you have to add an image. You can add something that or something other also. For now, I have used a paragraph and I have given a caption to the paragraph also. That is the only difference. Instead of using image, I have used paragraph here. That is all the difference. Nothing else in that. Did you get Harshal? Shraddha, can I answer your question at the end of the class, like maybe on the last 15 or 20 minutes of the class? Like that would be, I'll give you all the details that you need, or maybe all the help that you need. But it would be irrelevant at this particular point. The question is not relevant. Just the timing is maybe key. Right now, it would not be a good idea to discuss that. So, but I'll answer your question at the end of the class, Pakka, for sure. Okay? Is that fine, Shraddha? Then we can just go and audio.html. Okay, there's a way to see assignment on the. There is no assignment. Acha, by the way, remind me, there is a very important announcement that I'll do when I'll give the break. While giving the break, I'll do that as announcement. There is a really very important announcement that I have to do today. Okay. AUDIO audio. Okay. There for example, not for example, like the images that we used, the way we used images. Yes, about the contest. Okay, Abhi, don't. I will not entertain a single question regarding contest. I'll do the take 5 minutes before when I'll give the break. So I'll give all the information regarding that. Okay. But for now, I'm not entertaining any questions regarding that. Okay. So let's see. Let's move to the audio topic. Okay. In audio topic, it is all about adding an audio file into our HTML page. Okay. It is all about adding an audio file. So it is very similar to the image that we have been using right now. Let's see. Just give me 1 minute.
यार एक और चीज की really a sincere apology from my side, because today I'm getting a lot of call, but something is very urgent. My mom is in hospital, so I really can't ignore these calls. Really sorry for this, but please. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. ऑडियो टैग. ठीक है. द सिंपल ऑडियो. It's okay, it's okay, it's okay. My sister is there with her. My sister is there with her. I was there in the hospital only. अभी वो क्लास लेट उसीलिए हुआ था. I just came running, so it's okay. ठीक है. देखो, the simple as leave it, ignore that part. Let's focus on the class. Let's focus on the class. The purpose of the class should not be dismissed. ठीक है, मतलब क्लास बेकार नहीं आना चाहिए इन सब चीजों की वजह से. तो let's just focus. ठीक है. The way we use image tag, we will use the similarly the audio tag also. ठीक है. Similarly, just use the source. अच्छा, by the way, I have put a image tag for yesterday's class. I think there was an audio file somewhere I put. ठीक है. I have an audio file on my desktop. I will add that audio file from my desktop. Maybe की ठीक है. Leave it. ठीक है, ये रहा. And maybe I will rename it. ठीक है जी, ठीक है, ठीक है. Just simple. Just I'll go and add this image audio file. ठीक है. As simple as it is. This is a new file, so I'll have to open this on a new. Yeah. You can see one thing. ठीक है. यार मैंने ऑडियो तो लगा दिया. Missing uploading notes. Yes, Sidhu, I have taken that notes. I've taken that point into the consideration. ठीक है. Just something terrible from past last 4 days. I'm suffering with a lot of terrible situations. So just forgot that. But today I'll do it right away after this class only. In fact, in the last 5 minutes of the class में ही कर दूंगा. बस 2-4 कमांड्स ही होते हैं GitHub पे पुश करना. अच्छा ठीक है. बट यार देखो, एक चीज बड़ा अजीब सा हो रहा है. अजीब सा नहीं हो रहा है. In the image tag, if I just use a image tag, and the moment I use a iPad, ठीक है, फोटो तो आ जाता है. ठीक है, फोटो तो आ जा रहा है. But this is not happening. But this is not happening with the source tag. Like sorry, this is not happening with the audio tag. Basically, audio tag is there, still there. There is a contest tomorrow. Not tomorrow, I guess day after tomorrow. Day after tomorrow it is. ठीक है. आज क्या contest वाले के बारे में ना थोड़ा सा let's be specific to the topic. There will be a particular 5-minute entirely discussion around the contest only. ठीक है. So let's be strict to the topic. तो ये ऐसा कुछ हो रहा है ना, मतलब हमें कुछ दिख नहीं रहा है, तो बस कुछ नहीं है. Simple. Just add. You need to add CO and controls. ठीक है. Now you can see the audio file is there. We can just go and play this also in the
प्ले हो जा भाई, ठीक है, leave it. So you can just play by adding controls. By adding control, see, it's not that only this. By adding controls, without adding control, also there was the audio file was there only. You can just go on inspect and यार तू क्यों सर्च रिजल्ट कर रहा है? तेरे को तो मैंने बोला भी नहीं सर्च रिजल्ट करने को. नेटवर्क, इमेज, मीडिया, किधर गया, ठीक है, छोड़ो, इग्नोर करो. But there is there only when you add just controls, it will just see the visibles. You will get all the controls. Now you can play. You can move ahead or below. मतलब आगे पीछे मूव कर सकते हो, ठीक है, कुछ इस तरह से कर सकते हो. As simple as it is, ठीक है. Now there are some other tags also that you can use. Those are like loops, ठीक है. एक बार मैं भूल ही गया हूँ. AUDIO ऑडियो टैग in HTML. MDN. This is the Mozilla Developer Networks. You can always refer to this. Embed audio tags. What are the controls over there? Controls, source, enable autoplay, preload, yeah, loops, muted, and all those things. Source, control, audio, add कहाँ पे करते थे? audio, controls. Your auto play, move muted. ठीक है, हाँ जी, यहीं पे है. So here it is. Now in case 3 dots remaining for the remaining matter, and the 3 dots for the matter organization maintained. There was that 3 dots for playback speed and all those things. ठीक है. Yes, you can do that. हर्षित, देख लो, कर सकते हो. यहाँ पे आ जाओ, एक image tag यूज करो, img image and dot iphone and use width width equal 100 pixel and HIGST height, not hidden, HIGST height equal 100 pixel. ठीक है, and then you can just use a BR. ठीक है, like this you can do. ठीक है जी. There are some other things that we can just do about it. Controls. In controls, you will just have few are the things that is loop, or maybe you can say or muted. In this case, देखो, ध्यान से देखो. I'm refreshing the page. Okay. So whenever sometime, ठीक है, is there everything logic behind the control? No, sir, I'm speaking about attach directly. यार हर्षल, ऐसा मुझे अभी डायरेक्टली कुछ क्लिक नहीं कर रहा है. मे भी कर सकते हैं, ठीक है. तो इन द ब्रेक आई विल सी इफ देयर इज सम वे टू डू दैट एंड देन आई विल लेट यू नो. ठीक है, अभी तो ऐसे मेरे को डायरेक्टली क्लिक नहीं कर रहा है. सिद्धू, या द लॉजिक बिहाइंड द कंट्रोल इज ना कि यार आपको विजुअल्स होना चाहिए ना. इट जस्ट मेक्स ऑल द कंट्रोल्स, इट जस्ट गिव यू ऑल द कंट्रोल.
ठीक है, it's very simple सिद्धू, it's very simple. देखो ऐसा है कि it's just giving you all the controls. You can mute it, you can play, you can pause, you can or like that. ठीक है. Now there is a muted, there is another. ठीक है. Sometime like when you are opening WhatsApp, when you are opening WhatsApp, you see कि your friend has sent some audio message. ठीक है. Very good audio message. That would be like, oh किधर है, कहाँ है, and with some really good kind words, very good kind words. You don't want to open, and when you want to open, you don't want to play it directly on the full volume. So maybe you can add, and you're developing your own WhatsApp or your own sort of application. In that case, you can just put muted. So what it will be, whenever your video will render or like audio will render, it will be muted. You can just unmute it afterwards to hear, but it will be muted. Then there is another loop. Okay? It will just keep the video play in the loop for 9. Can you see this? I have not played it again by myself. Okay, I have not played it by myself. Audio to click. शायद कर सकते हैं, मे बी कि मैं इधर कुछ लिखता हूँ, कुछ हो रहा है, दिख तो नहीं रहा है. I am actually not aware. मतलब शायद मैंने अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं है. In the web development, it is very hard to say कि it is not possible. I always choose to say कि I have not done this thing. ठीक है? It would be very arrogant of me or very like self-centered of me saying कि यार ऐसा हो ही नहीं सकता. ठीक है, मतलब कि कुछ मैंने किया नहीं है तो नहीं किया है. तो maybe we can do that, but as of now I have not done something such that. CSS के थ्रू हाइड कर सकते हैं, बस टेक्स्ट शो कर सकते हैं. यार देखो, मैं HTML सिर्फ HTML की बात कर रहा हूँ. Certainly CSS JavaScript के साथ तो कर ही सकते हैं. प्रिया, I've just not used because when you are developing now a website purely as a developer, you never just use only HTML. ठीक है? Just like in the today's class only, I'll try to teach you a concept called forms. If we'll get enough time, because yeah, this will take just 15 more minutes. मेरा रेज्यूमे प्रोजेक्ट देखना है. You all want to see my resume? क्यों भाई? चलो तुम लोगों को एक लाइव प्रोजेक्ट दिखाऊं. मेरा एक लाइव प्रोजेक्ट है. This is my live project. This is all. What I did was कि you can just go and courses. मतलब ऐसे मेंटेन नहीं करता हूँ तो थोड़ा सा, और ये सारे फ्री रिसोर्सेज पे हैं, AWS पे होस्टेड नहीं है, तो it might take some time. So all the free resources that are present all over the on the internet, there is nothing as such like कि मैंने कुछ courses इसमें बनाए हैं. I just accumulated all the free resources at one particular place. ठीक है? So in case some of you want to learn advanced algorithms, so you can just go here, free online videos by Harvard University and Open Culture, like all the websites that I have used for my learning. So the thing is कि I have also used a lot of free resources on YouTube, on MIT Open Course website. ठीक है? एक ना ज्ञान की गंगा है. There is one particular website that I call, it is the ocean of the knowledge. MIT
OCW। अगर तुम्हारे अंदर तुम में से किसी के अंदर पेशेंस है तो कभी भी इस वेबसाइट को चेकआउट करना। ऑल द थिंग्स आर फ्री। बेस्ट प्रोफेसर्स इन द वर्ल्ड, बेस्ट, एग्जैक्टली द बेस्ट प्रोफेसर्स इन द वर्ल्ड, ठीक है, इन डिटेल, और उनके क्लासरूम के लेक्चर्स यहाँ पे अपलोडेड है, ठीक है। तो मैंने एल्गोरिदम यहीं से पढ़ा था, मैंने ये एरिक डेमेंसर से पढ़ा है, तो आई कॉल माई सेल्फ हिज स्टूडेंट। मैं इतना लकी नहीं हूँ कि एडवांस में चला जाऊँ एंड ऑल। तो ये रहा इधर का एक कोर्स है, इस तरह से है। ये एक परप्लेक्स का प्रोजेक्ट है, ये मेरा एक लाइव प्रोजेक्ट है, ठीक है। एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट बेसिकली अगेन की नॉट ओनली आई हैव मेड, मेरे साथ एक मेरा फ्रेंड भी है विनम्र, वी बोथ हैव मेड इट टुगेदर, इट वाज अ ग्रुप प्रोजेक्ट। अभी लाइव होस्टेड है, मतलब हमेशा चलता रहता है, तो यू ऑल कैन जस्ट चेक आउट एनी टाइम। पहली बार लगा फ्रंट एंड में आके अच्छा किया, पर इनका एक्शन में मैच कहाँ आएगा। अरे यार प्रियांशु, अगर कुछ बोलूंगा तो ऑफेंड तो नहीं हो जाओगे? मेरे बाबू ने थाना खाया समझ में आता है? वो तो अगर वो समझ में आ जाता है तो ये भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। चाहत होती है तो सब कुछ सीख समझ में आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, चाइनीज नहीं बोल रहे होते हैं, ठीक। अरे तो फ्रंट एंड ही बाबू है तो फ्रंट एंड की भाषा समझो, ठीक है। चलो चलो या ठीक है, थोड़ा बहुत फन भी कर लेना चाहिए क्लास में। लेट्स कम टू द मेन टॉपिक। श्योर, मतलब आई अप्रिशिएट। ठीक है जी, चलो। ये रहा ऑडियो, ऑडियो में या दीज आर ऑल द टैग्स दैट यू कैन यूज। देयर इज समथिंग मोर दैट you can see add, that is preload. There are three types of preloads, ठीक है। preload auto, ठीक है, it will just load the things, ठीक है। preload none, in case now the website is not this song will not be loaded in the front, ठीक है। when ध्यान से देखो, it is not loaded or it is not downloaded, ठीक है, saving the cost of memory, ठीक है, or the saving the cost of data, whenever I'll click that time it will be downloaded, ठीक है। there is another if I'll just use none, ठीक है, तो see there is nothing, no data. Now there is another one thing, meta I guess, yeah, metadata. In metadata, some data about, metadata is basically some data about the data, ठीक है, data about the data, ठीक है। तो in that case की still the song is not loaded here, but the length of the data about the song, like the length or maybe some other thing has been loaded and we can use that, ठीक है। Here, anyone have any question till this point? Anyone have any question till this point? Any questions till this point? मेटा डेटा इज बेसिकली, देखो यार, आपके पास एक डेटा है, ठीक है, तो उस डेटा का भी कुछ डेटा होता है, तो दैट इज कॉल्ड मेटा डेटा, ठीक है। द डेटा अबाउट द डेटा इज कॉल्ड मेटा डेटा बेसिकली, ठीक है। ठीक है यार, देन yes,
download option is also available. There are multiple. You just go here, write AUDIO audio MDN. Okay, there are tons of things. Mozilla Developer Network, HTML, all the tags and attributes you can just, there are hundreds, pause, play, playing, a lot of. So the general use that I'm teaching you. ओके प्रियांशु ठीक है, बता देता हूँ प्रियांशु, कोई बात नहीं. The metadata, what the metadata about the data. अरे देखो ये सॉन्ग है, सॉन्ग का मेटा डेटा क्या होगा, सॉन्ग की लेंथ कितनी है, ठीक है. अभी के लिए सॉन्ग का अगर कुछ नाम होता है तो वो, तो ऑल दोस थिंग्स विल बी लोडेड just like this. Right now I have used metadata na, so the length and all those things, the size of the data, the data about the data, that is very simple. ठीक है, the data about the data is loaded here and we can use that. ठीक है, all this is clear. UTF-8 is नहीं समझा सर, नहीं समझा. Like thumbnail of your video photos inside. ठीक है यार, देखो कुछ लोगों को ना मेटा डेटा समझ में नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रखो. आज की क्लास के एंड में या थोड़ा सा और, या मे बी नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अभी तक मैंने आप लोगों को ये वाली चीजें नहीं बताई हैं. देख रहे हो यहाँ पर भी ये चीजें नहीं बताई हैं अभी आपको. मेटा, यहाँ पे 3 चीजें हैं, व्यू पोर्ट. तो ये वाली जब मैं चीजें आपको समझाऊंगा ना, आपको उस वक्त थोड़ा मेटा डेटा के बारे में ज्यादा क्लियरिटी आएगा. यू विल जस्ट अंडरस्टैंड लिटिल मोर क्लियरली. ठीक है, this line Priya, you are asking about this line 4, 5 and 6. 4, 5 and 6 you are asking, Priya. ठीक है, this will be I have a complete separate topic for this. ठीक है, don't worry, like when we will be learning about the semantic tags and all those things, then like the overall web page. ठीक है, तो web page के performance कैसे improve कर सकते हैं and all, so these are help to improve the SEO and all. So I'll tell you about that. ठीक है, मैंने आपको day 1 पे ही बोला था. इनफैक्ट अभी आप अगर ये हटा भी दोगे ना, वेबसाइट पे कोई फर्क नहीं आएगा. ठीक है, दैट इज अ एम्बेडेड वन, लाइक प्रीवियस प्री एनरोल्ड वन. ठीक है, डोंट वरी प्रिया, हैव पेशेंस. इसका आई हैव अ प्लान, अ कंप्लीट टॉपिक ऑफ, नॉट सेशन, कंप्लीट टॉपिक अराउंड दैट. ठीक है, ठीक है जी. ये इतना रहा ऑडियो के बारे में. तो लेट्स टेक अ ब्रेक. अभी मेरे लिए ब्रेक नेसेसरी है. आई हैव टू टेक सम कॉल्स एंड ऑल. तो ऐसे में 10 मिनट बाद देता. तो लेट्स टेक दिस ब्रेक जस्ट 10 मिनट्स प्रायर. हैव योर लंच एंड ऑल एंड लेट्स मीट आफ्टर 15 मिनट्स. ठीक है, 15 मिनट का ब्रेक है, 15 मिनट का ब्रेक है. सो वी विल मीट अराउंड 9:37, 38. ठीक है, 15 मिनट्स ब्रेक. लेट्स टेक अ 15 मिनट ब्रेक. यू ऑल हैव योर डिनर एंड ऑल. ठीक है, ठीक है यार, चलो मुझे तो अभी ब्रेक चाहिए. टेक केयर.
Hi, hello, hello everyone. Good to see you all back. Uh, just let me know how many of you are in the actually in the class. ठीक है, ठीक है. Let's start. Let's start it. ठीक है. We will now learn about video tags. अच्छा, before moving forward, there is an announcement that I have to do to all of you. Tomorrow or day after tomorrow, you will have a contest. Okay, I'm not sure about the date when it is. Maybe most probably Harshit Bhaiya will tell you all about that. Okay, you will have a contest regard. Okay, tomorrow. Okay, tomorrow. So ठीक है. So there will be some CSS questions as well. Okay, because the contest is already created. Development तो नहीं कराएंगे. अरे नहीं, those are MCQ questions. They will not ask you to develop. अरे सुन तो लो, पहले पूरी बात सुन लो. क्या हो गया बेटा? ठीक है, पूरी बात सुन. Yesterday will be lecture. ठीक है. So उसमें CSS भी आएगा, जो आपका कल पेपर होगा उसमें CSS भी आएगा. But the thing is कि you have not been taught CSS as of now. ठीक है. The basically कि already done with it. ठीक है यार, किसी को आता होगा, किसी को जो पहले किया है उसको आता होगा, but नहीं हुआ होगा. ठीक है, बहुत लोगों को नहीं पता है. देखो बेसिकली ऐसा था कि 2 दिन आपका क्लास पीछे चल रहा है. यूजुअली आज की क्लास से ये वीक खत्म हो जाता, एंड बाय टुडे CSS हम थोड़ा बहुत पढ़ लेते. But I have all Harshit bhaiya know about it, and everyone is aware about that. ठीक है, everyone is aware about that कि you have not been taught, but the contest is already created. So even I think there is only 1 or 2 questions are for CSS, so that will be overlooked. ठीक है, even if you just your performance or your capability. Your capabilities will not be judged. Based on that. ठीक है, just give me 1 second. ठीक है, सॉरी, रियली सॉरी. ठीक है, तो आपका, हमें पता है कि आपका CSS पे आपको नहीं पढ़ाएगा और आपका पेपर हो रहा है. In fact, there is only 1 or 2 questions of CSS is there in the test.
So you will not be judged over that. That questions will be overlooked. That questions will be overlooked for sure. That question will be overlooked. आपको वो चीज छोड़ दिए जाएंगे. Topic of the test will be certainly all the things that have been taught to you till now. All the things that have been taught to you till now. HTML and all. ठीक है? जो भी आपको पढ़ाया गया है. Yes, you can do like a autoplay muted. ठीक है? Autoplay muted. Is that you provide any links, sir? Provide any links. Sidhu, I didn't get your question. Yeah, the link will be shared to you on Discord. The link will be shared to you on Discord. Okay, you are asking for the preparation material. Okay. Are you all asking for the preparation material or something like that? ठीक है. तो सुनो. Yes, of course. I know. ये कोड जो भी अभी तक पढ़ा हुआ है ना, ये पूरा कोड एक ही फोल्डर में है. राइट अवे क्लास खत्म होने के 10 से 15 मिनट में गिटहब पे चला जाएगा और आपको डिस्कॉर्ड पे, व्हाट्सएप पे हर जगह, मार्क माय वर्ड्स, 10 to 15 मिनट्स मैक्स. क्लास खत्म होने से 15 मिनट से 20 मिनट में आपको व्हाट्सएप पे इसका सारे नोट्स मिल जाएंगे. ए बी, मैं आप लोगों को ये बात बताता हूँ एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ. ठीक है? आई एम स्पीकिंग विद एक्सपीरियंस, हैविंग 2 years of teaching experience and cumulatively 4 to 5 years of developing experience around. चाहे डेटा स्ट्रक्चर हो, चाहे ये हो वेब डेवलपमेंट हो. ठीक है? लर्न करके ये एग्जाम्स नहीं होते हैं. ठीक है? लर्न करके ये एग्जाम्स नहीं होते हैं. these are all by doing. तो the better way, in what ways question will be, please. Sidhu, I have not said that question. ठीक है? It is not me. There are multiple instructors at the front for front end module. There are like how to say this. I'm taking. There's Ash sir that take. Then there is Omraj sir that he will take your other sessions and all. ठीक है? पहले मेरे लिए some question related back. I'm asking this because the want to ask. Can I ask you? Naseem, I'll answer your question at the end, please. I'll answer that question at the end. ठीक है? कोई बात नहीं यार, हो जाता है, अच्छे से हो जाएगा. तो जो भी कराया है ना, जो भी बनाया है वो करो. दूसरा चीज कि देखो, एक चीज आप लोग देखे होगे कि आई एम लाइक मोर ऑफ अ बेसरम टाइप. ठीक है? आई एम मोर ऑफ अ बेसरम टाइप. मैं क्लास के a lot of confidence boost. ठीक है यार, देखो मेरे को क्लास में बहुत सारी चीजें नहीं आती है. मतलब नहीं आती का बात नहीं होती है, मतलब भूल जाता हूँ. इतना वास्ट HTML है, इतना वास्ट CSS है. CSS तो और भी मेरे को बहुत अच्छे से, मतलब टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स वगैरह याद नहीं रहते हैं. एंड किसको याद रहेगा यार, मतलब इतनी सारा चीजें. लेट्स come here and see. Only if I just go and HTML MDN खत्म ही नहीं होगा. ठीक है? खत्म ही नहीं होगा. Just if you go introduction to HTML, multimedia and embedding, HTML tables, यार ये बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है. हाँ ये देखो, HTML attributes, elements and all, खत्म होने का नाम ही नहीं लेगा. ग्लोबल एट्रीब्यूट्स एंड ऑल दोस थिंग्स आप नहीं याद कर सकते. तुम्हें क्या लगता है मेरे को याद होगा? ये सारे नहीं याद है, बिल्कुल नहीं याद है. मुझे क्लास में कुछ चीजें नहीं याद होती हैं. व्हाट आई डू, आई जस्ट गूगल इन फ्रंट ऑफ यू. ठीक है? तो डोंट ट्राई टू लर्न. व्हाट माय इंटेंशन वुड बी, देखो इट वुड बी कि मैं टीचर हूँ. ठीक है? बल्ला व्हाट स्टूडेंट्स विल थिंक. मेरे को क्लास से पहले याद करके जाना चाहिए. आई गूगल अराउंड इन द क्लास व्हाट स्टूडेंट्स विल थिंक. सर को नहीं आता है, सर क्लास में गूगल करते हैं. ठीक है? ऐसे भी सोच सकता हूँ. बट नो, द फैक्ट इज दैट किसी को नहीं आता है. Only what you learn in web development is reading and using. अभी मैं आपको अगर CSS के प्रॉपर्टीज दे दूं, CSS को बोल दूं इसमें पैडिंग लगा दो, इसमें मार्जिन लगा दो, 2 डिव्स कर दो, एक दो डिव को दूसरे से के बीच में थोड़ी सी पैडिंग ऐड कर दो, ये सब कर दो, आपको नहीं पता है कि क्या करना है, कैसे करना है. After learning CSS, you should be knowing what padding is basically, what margin is, what border is, how to center a div,
how to align the text at the center or at the bottom or at the left. Maybe after that, ठीक है, maybe उसके बाद भी आपको चीजें याद नहीं होंगी, ठीक है, at that time, या flexbox, grid and all those things, display and all, yeah, sure, ठीक है, ठीक है, तो that thing, no one remembers that. You should be what you learn is to read from the website and start using it. If you get that level of confidence, you're good to go. Don't go on this Mozilla developer website right now, because it is like very structured and little complex. Okay, I will prefer for at your level. At your level, I would say, suppose you want to. Right now, I was using image. Okay, IMAGE image HTML and just write W3 SCHWL schools. Okay, W3 schools is like a good resource. Okay, थोड़ा सा beginner friendly है. W3 schools is beginner friendly. Now you can just go and in the image tags, you can see all those things, try out yourself. You can add multiple things and all, and you can make your websites, or you can make your projects, or maybe web pages and everything. ठीक है? So learn via doing. Do not memorize. याद मत करना यार, ठीक है? ऐसे टैग वैग के नाम सब से याद मत करना, नहीं तो मैं अपना पढ़ाना अनसक्सेसफुल कंसिडर कर लूंगा एट द एंड कि I was not successful as a teacher. Rather, I failed as a teacher. I failed at teaching. If you all start learning, being nice student, if you start learning, like learning means memorizing. कि okay, H1 tag is for there are 6 types of tag, H1, H2, H3, H4, H5, H6. नहीं याद है यार. Headings कितने हैं? HEADINGs headings in HTML. Simple. W3 school गए इधर. There are 6 types of heading. ठीक है. A lot of attributes. ठीक है. बहुत सारी चीजें हैं. जो भी है, Google करो. Because ठीक है. I hope you are getting what I'm trying to throw at you. Okay? Just let me know if you're getting my essence, what I'm trying to say. कि A, don't fear with the exam. B, अच्छा एक और चीज कि your exam is proctored. ठीक है? Your exam is proctored. Basically it is an MCQ exam. So your exam is proctored, and simply if you'll use any other tab or you will use any other window, penalty. Or maybe I guess not termination from the course, not like it will be 0 marks or something like that. Okay, let's start. So we were left with ठीक है. अपन ने क्या कर लिया था? We did the audio part. ठीक है. Let's say day 4. I have the video dot HTML. In the similar way, like you added image, but there are some different things also in the video tag. It is not only about the HTML, like so only about the whatever we did. Let me just see video source. Yeah, ठीक है. Just go and add video. Just video tag. ठीक है. And I do not have that, so maybe I'll just ask Jai Mata Di dot MP4. ठीक है. Let's open this. सुनना तो चाहिए था. What's wrong? Video.
Do I have some? Let me see if I have some video on my. Okay, I have some videos. Just give me 1 second. I have some videos. Okay. And yes. Yeah. ठीक है जी. So I'll again put this here. और कंट्रोल नहीं लगा. अच्छा, हाँ कंट्रोल नहीं लगाया, भूल गया मैं. देखो कंट्रोल्स. या कंट्रोल से भूल गया था मैं. I just forgot to add controls. I just forgot to add controls. ठीक है. Maybe कि this will play. This will. ठीक है, play नहीं हो रहा है. This file may be corrupted or something like that. ठीक है. So you can just add, and here you can see something. Maybe कि you were asking कि multiple add we can give. So I would add maybe कि muted auto play. ठीक है. देखो muted and it is trying to auto play, isn't it? Whenever I'm loading, since it does not have a good file, like it does not have a proper file, it is not playing. If file is बस proper file है नहीं, for the same reason it is not playing, but it is trying to play. ठीक है. And it is muted. ठीक है. We can also use loops. ठीक है. There is one more attribute that I was I'm forgetting. Yeah, preload and all those things you can add, and here also preload auto. In that case the video will be downloaded. Autoplay but not autoplay. Why? यार देखो ना, ये जो मैंने फाइल लगाई है ना, this file is corrupt. अब मैं डाउनलोड करके फाइल लगाने नहीं जा रहा. ठीक है. अभी मैं YouTube से वीडियोस भी लगाने सिखाऊंगा कि हाउ वी विल ऐड YouTube वीडियोस फ्रॉम YouTube एंड ऑल. डोंट वरी दैट अबाउट दैट. ठीक है. अभी अपन YouTube वाले वीडियोस भी लगाएंगे. ठीक है. वो भी लगेगा, डोंट वरी. उसको भी सीखेंगे. और ये प्ले इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये फाइल हमारी करप्टेड है. ठीक है. हाँ जी बिल्कुल. फ्रेम के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ उसी के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. That is iframe. Embedded links, adding embedded links and all. So this is all. तो इसमें ही रहा. एक और चीज है कि suppose कि I am going on YouTube. Next topic ही है YouTube. I am going on YouTube and maybe one of my favorite teacher, Hitesh. He's really a very good teacher. Very humble, very polite. So let's suppose I want to. Hey there everyone, Hitesh here, back again with and I want to embed this video in my HTML file. ठीक है. There would be some file in the, or maybe in websites that you see anywhere. There are some YouTube videos that are being played. ठीक है. There is some YouTube videos. Even I feel there in the AccioJobs website, ACCO AccioJobs website, there is a YouTube video that is being played. I am not sure about it. ठीक है. AccioJobs की वेबसाइट पे नहीं है, बट बहुत सारे वेबसाइट पे है. मेरे को कुछ याद करने दो. कोई ऐसा वेबसाइट जहाँ पे ऐसा हुआ हो. Amazon पे नहीं है, Flipkart पे नहीं है, किसी एजुकेशनल वेबसाइट पे होगा. मतलब यार आई नो सम वेबसाइट्स जहां पर हैं, बट बोथ आर बेसिकली आवर कॉम्पिटिटर्स, सो cannot take or cannot open their websites. I know some edtech से हैं, क्लास में ओपन नहीं कर सकता. मतलब
as a instructor, I also have signed some bonds and all, some contracts. तो कल मुझे अपनी नौकरी प्यारी है. I don't want to play with my job. ठीक है, तो ठीक है, चलो अभी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा बेसिकली. तो I want ना कि this YouTube video should play in my this. So there is nothing. You just go and add this embedded link. अभी iframe के बारे में मैं पूरा डिस्कस करूंगा. ठीक है, to add a YouTube video, you just go copy this link and just add this. ठीक है. Now can you see? Just see this. This is your HTML page. ठीक है. Maybe I'll add a BR here. This is your HTML page. नहीं ये HTML पेज तो नहीं है मेरा. ऑडियो वीडियो वाला पेज किया क्या? कुछ नहीं. Open with live server. Here it is. Can you see? Hey there everyone, Nitesh here, back again with another video, and welcome to the TypeScript series. So in case you are new along from learning from me, or in case you have watched, ठीक है, अभी we can ना add this source के बाद we can add मेरे को एक बार कमांड देख लेने दो क्या है. Reload muted iframes के अंदर control can equal one, yeah. AUTO PLAY autoplay equal 1. hey there everyone, Nitesh here, back again with another video, and welcome to the TypeScript. देखो इसी के अंदर the when just give me 1 second, just give me 1 second. इधर मत ऑफ क्लास लगे. ठीक है, या let's start. तो देखो autoplay and all, now you can see all the attributes basically in embedded section, or if I'll just go and format the document, here it is. ठीक है, in the embedded section, right after the source, right where the source is ending, previously it was like this. ठीक है, previously it was like this. ठीक है, तो it is also like that only. अब जैसे कह रहा वैसे, to add multiple controls in the embedded link, all you need to do after the source, add a question mark, and now you can say AUTO PLAY autoplay equal 1. It is like a Boolean value. ठीक है, autoplay will become true. Hey there everyone, You Nitesh can see here, the back again autoplay with is another video, happening. and You can also add and muted and mute equal 1. Yeah, MUT mute equal 1. Now if you see, the video will be autoplayed, but it is muted. ठीक है, the video will be autoplayed, but it is muted. You can also add here and muted and क्या और हाँ LWP loop equal 1. ठीक है, now what will happen? See, right, not like this, right? If I just go here and let's say loop equal 1, it should start another again. Loop तो चला नहीं. Yeah, if we embed the video, will it show ads? No sir, not started. पता नहीं यार, कुछ तो गलती हुआ होगा. ठीक है, देखता हूँ क्या गलती हुआ है. But like other things are working right, fine. If you just see, if I put this muted equals 0, see, if hey it's there everyone, Nitesh here, the back audio again is with there, another video, and welcome to the TypeScript just series. mute equal So in 1. case you are
it will start with muted equal 1. Is there anything that I will make that it will make the web slower? Ricky, देखो, certainly, but depends ki how heavy your web page is. Depends ki how heavy your web page is. ठीक है, इस पे बहुत ज़्यादा depend करेगा how heavy your web page is. ठीक है, that will matter. मतलब if there is only one video, it won't matter a lot. ठीक है. One more thing, in iframe, it is. I just want to discuss a little bit about iframe. ठीक है. iframe is not only about adding videos. ठीक है. Using the iframe, you can add a lot of these videos and all. ठीक है, the frame border and all those things. When we will learn the CSS part, we'll learn that. ठीक है. All bordering and all. बहुत सारा. तो अभी YouTube videos को तो direct embed इस तरह से कर सकते हैं. ठीक है. But I want to discuss a little bit about iframes. Format. ठीक है. iframes. या iframes का ना एक अलग टॉपिक ही बनाते हैं. iframes.html. ठीक है. देखो बेसिकली iframe क्या है, इसको हटाओ. iframe is like it create a frame in your web page. iframe, and here if you just come here, okay, let's open this. Let's open with a live server. Okay, and iframe. Okay, here in the source you can add other HTML page also. Index.html. Okay, this was my HTML page. Okay, can you see? Let me add some BR into file. ठीक है. ध्यान से देखो, इसके ना फ्रेम बॉर्डर इक्वल 1 कर देता हूं. Now it will make clear. Can you see? We are creating a section. We are creating a section in the web page only. मतलब it is something like a visual. आप देख के आप समझ सकते हो. इसको मैं आपको वर्ड्स पे कैसे समझाऊं? How to explain this in words? What iframe shows? iframe just give you a frame in the web page, in the current web page, where you can display anything that you want. When we were discussing about this video part, this video HTML. What it did, इसमें वीडियोस में तो iframe भी था ना. It just gave a section. ठीक है. Frame border, video height, width would be maybe I would say 200 pixels, and then a height would be around 200 pixels. So width I would say 400 pixels would be good. So देखो, what it did ना, it created a frame. Let me go here, and in my current website, it just created a frame. In this frame, right now I'm adding a YouTube video. Okay? Right now I'm adding a YouTube video. It is my choice. Okay? It is my choice. मैं अभी YouTube video add कर रहा हूँ. कोई बात नहीं भाई, मैं बाद में मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूंगा. ठीक है. The same thing in iframe, using this iframe tag, this is like picture in picture instead of web page inside a web page. It's like a picture inside a picture instead of, no. Vamshi, you are wrong. If you are just taking it as a relative example, ठीक है, कि मतलब when we say other things, if you are taking it as a relative example, then it could be, then okay, yes, it could be. But if you are taking it as an absolute example, no. देखो, for the same reason,
if I just go. Yeah, I can use anything here. I have used another HTML page. Let's go. सबसे मस्त बात पता है क्या है? Here it is. Here is a web page. I can add a iframe here only. Let's say I will add an iframe here. Index.html. अब मस्त बात पता है क्या? किधर गया? Yeah. I'll give a frame border. Frame border देने से पता नहीं चलता है. मेरा frame border दिया. For ads. No. Space also not created for ad. Okay. Now can you see? I have added the same web page. In the web page itself. मैं खुद के पेज में खुद में ही add कर सकता हूँ. So this might recall you from recursion. If any one of you have learned recursion, adding a web page in the web page. Sorry, adding a calling function inside a function. Sorry. मैं क्या बोल रहा था? Calling function inside the function. IRCTC खोलो, iframe दिख जाएगा. IRCTC iframe इसका कहाँ पे है? यहाँ पे देखते हैं. This is pop-up. नीचे. This is not iframe here. This is not iframe. iframe would be na कि that would create a complete different section. In case, let's do this. Yes, see here this video. अब देख रहे हो ये क्या हुआ है? ये ऑटो प्ले म्यूटेड पे है. Now you can see chat section यूटिलिटी पे दिखता है. FB में दिख जाएगा सर. ठीक है. So here if you just go and inspect the HTML element, video quantity and layouts, Loom, IRCTC. मैं तुमको इसका HTML सोर्स ही दिखाता हूँ. रुक जाओ. पर कहीं ना कहीं तो होगा. देखो म्यूटेड इक्वल म्यूटेड, ऑटो प्ले इक्वल ऑटो प्ले. देख रहे हो? एग्जैक्ट. We have done it as muted equal one and all. The same thing. हम जो भी पढ़ रहे हैं ना, there is live example present in front of us. यही सेम, इसी को मैंने इंस्पेक्ट किया था, इसी एलिमेंट को मैंने इंस्पेक्ट किया था. देख रहे हो? म्यूटेड इक्वल म्यूटेड, ऑटो प्ले इक्वल ऑटो प्ले. दिस इज म्यूटेड ऑटो प्ले. देखो, दिस वेबसाइट इज ऑटो प्ले एंड म्यूटेड. ठीक है. This is a iframe, a real life example of iframe. ठीक है. डैशबोर्ड पे दिखता है चैट सेक्शन. ठीक है यार, all clear till this point? Anyone have any doubt? We have done with the videos and audio multimedia section we have done. Sidhu, what's my Wi-Fi got disconnected. It's okay, Priyanshu, then watch the videos. You will get the video access. Don't worry. Yes, अभी हमें टेबल और फॉर्म्स दो चीजें और पढ़नी है. तो विल स्टडी टेबल एंड फॉर्म्स. ठीक है. कल से CSS स्टार्ट हो जाएगा. कल CSS 2 क्लास में CSS हो जाएगा. डोंट वरी. Krishna, I would suggest if that's the case, Krishna, I'm pretty sure you are not developing.
Priyanshu, only the way to do this is ki build a project. Yuvraj, I think his name is Yuvraj, that guy. I was really very happy to see that the next day, the previous day, he asked me some doubts, and I just told him ki use try to build your own resume using HTML page, and he really went on and made. Yeah, I was really very happy to see that. So I'm pretty sure he would be learning more those things when he did when he really built his website, resume. Things would make more clear rather than just watching the videos or just looking at the tags and reading and it all. Yes, there is a class. Yes, there is a class. Weekends are holiday. No. We have class tomorrow and day after tomorrow also. Saturday, Sunday we have classes. The reason for that is that we have holidays tomorrow also. Sorry, हमने 2 दिन अभी पहले holiday की थी ना. Friday, Wednesday and Tuesday and Wednesday छुट्टी थी class. Same class, same timing. अच्छा, if you all want, we can just but everyone if agrees, weekend है तो थोड़ा हम पहले भी कर सकते हैं. You all are मतलब छुट्टी रहेगी तुम्हारी, तो if you all want ये कर सकते हैं. 2 दिन ऑफ दिया था भाई, 2 दिन ऑफ दिया था. Tuesday, Wednesday ऑफ था. अच्छा ठीक है, व्हाट्सएप पे बात कर लेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पे बात कर लेंगे. लेट्स टाइम निकल रहा है. लेट्स ठीक है, लेट्स गो एंड डू दिस थिंग्स. नाउ द अदर थिंग, यस, फॉर एवरी वन ऑफ यू, आई एम रियली थैंकफुल कि आप लोगों ने इतनी देर से बहुत पेशेंस से पढ़ा. Just give me your attention for the next 30 minutes because I'm really going to discuss a very important topic. People, a lot of students, it look very easy, but they end up confusing a lot. Okay? They end up confusing a lot. बहुत easy topic है. Just be with me. It will look like halwa. Just give me 30 minutes, not even 30 minutes, 20 minutes. After 20 minutes, it will look like halwa. Okay? But for the rest 20 minutes, give me your attention, full attention. Let's start table. Table, table.html. ऐसे मत बोलो भाई, मेरे को भी भूख लग जाएगी. मैंने सुबह से बस ब्रेकफास्ट किया हुआ है. टाइम टेबल इमेज. लेट्स से हम ना कुछ किसी का कॉलेज का कोई टाइम टेबल अच्छा सा है या क्या? कॉलेज टाइम टेबल, स्कूल टाइम टेबल. स्कूल टाइम टेबल, इमेज. हाँ, ये रहा. ये एक अच्छा सा वेबसाइट है. ठीक है, अपन एट द एंड कुछ ये बनाने की कोशिश करेंगे. ठीक है, लाइव इन द क्लास अपन कुछ ऐसा बनाने का कोशिश करेंगे. ठीक है, तो लेट मी जस्ट कनेक्ट माय पेन टैब. एक्चुअली कनेक्टेड है ही. गिव मी चला जाओ उधर. एंड फॉर दैट आई वुड नीड माय पेन आल्सो. किधर गया? एक मिनट देना यार, पेन कहाँ रख दिया मैंने. Just give me 1 second.
ठीक है, इट इज वर्किंग। देखो maybe this is your multimedia and images. Fine, is going interesting now. Forming table. Yes, yes, yes. It will be interesting. ठीक है, देखो एक टेबल होता है, ठीक है. This is how a table look like. Something like that. ठीक है. Basically, table is all about two things. Table is all about two things. कोई बता सकता है वो दो चीज क्या है? Can anyone tell? It is all about just two things. Row and column. Very simple. Very simple. Very simple. Very simple. ठीक है. It is all about rows and columns. ठीक है. It is all about rows and columns. ठीक है. इस जो चीज में आप पढ़ोगे वो कल टेस्ट में पूछेंगे. यार युवराज, the topics will be that. It is not that कि मैं जो क्लास में पढ़ाया वही चीज पूछेंगे, बट या टॉपिक तो वही होंगे. ठीक है. Matrix forms, row and column. So let's come and see how to make a row and a column in a table. ठीक है. The first thing. ठीक है. Here is tables. And maybe I would use a H2 tag. Let's learn, L-E-A-R-N, learn table. Okay. For that, first you need to give a table tag. A table tag. छोड़ यार, इधर आ जा. अभी तो yes, now it is better. I have better this thing. A table. ठीक है. Just give a table tag. ठीक है. Simple. By and table TR and DT. Yeah. TR is table row and TD is table data. मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ ना? रो and then column, each column and each column. ठीक है. I just got confused for 1 second. ठीक है. देखो, you just use a table tag that will create a simple table. ठीक है. Very simple table. In this, how you go? Let's put it here. ठीक है. In yes, and ठीक है. I can see some people already know. But ठीक है, bear patience, have some little patience. मजा आएगा, सीख लेंगे इसको. तो and table, first we create row. ठीक है. First we create rows, each and every rows. That is just created by using TR, table rows. ठीक है. You can create multiple rows. So maybe I would say row 1. ठीक है. I would create multiple rows for that. Row 1, and then I can say TR row. Sorry. Row 2, TR row 3, TR row 4. ठीक है. Just see it. ये क्या हो गया भाई? रो 1, रो 2 मैंने गलती कहाँ किया?
ये तो अलाइन नहीं होना चाहिए। गलती कहाँ किया? अरे उससे इशू नहीं है, उससे इशू नहीं है, उससे इशू नहीं है। ये सिमेंटिक्स नहीं आने चाहिए, ये एक साथ नहीं आने चाहिए। मान लो ये नहीं भी है ना, और टीडी मैं देता हूँ, मैं कहता हूँ रो 1 रो 1। गलती कहाँ हो रहा है? कुछ तो एक जगह पे गलती हो रहा है। अरे आई नो टीडी की टीडी से यू क्रिएट, वी क्रिएट कॉलम्स इन ईच रो, वी क्रिएट सेक्शंस इन ईच रो। ठीक है, आई थिंक सिर्फ रो क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, कोई नहीं। देखो, वी हैव अ टेबल रो। ठीक है, इन ईच रो वी मेक मल्टीपल कॉलम्स। तो आई वुड से कि डी using table data, then I would say row 1 col 1। ठीक है, row 1 column 1, this is the one of the data, the one of the column in the row, first row। ठीक है, row 1 column 2, the in the first row this is। now again if I'll say tr row 2, not just this, in this I will use td row 2 column 2। ठीक है, the first second row column 1 column not column 2 column 1। ठीक है, we row 1 column e row 1 column 4, so I have 4 rows। again key I would go and say here row 2 row 2 row 2 and row 2। ठीक है, again let's see the entire thing। I would say row 3 column 1 row 3 row 3 row 3। ठीक है, this is the first table without any borders or something, of empty cells। ठीक है, at this point थोड़ा थोड़ा दिखेगा। ठीक है, let's add little bit css। मैं थोड़ा सा इसमें css ऐड कर रहा हूं just for your visibility। ठीक है, bo a border equal 1 pixel so solid black। ठीक है, now can you see there are borders here at every row। अब देख रहे हो ये रोज में कैसे डिवाइड हुए हैं, मल्टीपल रोज। सो बेसिकली अभी थोड़ा सा इस पे ना थ्योरी, इसकी थोड़ी सी थ्योरी है जो हमें डिस्कस करनी ही होगी। वी कैन नॉट स्किप दैट थ्योरी। बेसिकली आ जाओ, तो ओवरऑल ये रहा टेबल के बारे में। इस पे आप थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट टेबल। पहले मैं टेबल टैग यूज करके, व्हेन आई यूज अ टेबल टैग ना, TABLE टेबल टैग। ठीक है, व्हेन आई जस्ट यूज अ टेबल टैग इट जस्ट क्रिएट अ टेबल, आई सिंपली क्रिएट अ टेबल। ठीक है, इसके बाद when I just use a tr tag in HTML we create row by row।
रो बाय रो, ठीक है. एंड इन ईच टेबल रो we create multiple columns. We create multiple columns. We use tr for creating row, ठीक है. Then we use td, that is table data, ठीक है. td for columns, for columns, ठीक है. अब कुछ इस तरह से करते हैं. इससे क्या होता है, एक रो के अंदर, इस पर्टिकुलर रो के अंदर, तो tr टैग के अंदर फॉलो अप होता है टीडी टैग, टेबल रो, और टेबल टैग के अंदर फॉलो अप होता है टेबल रो का टैग. ये हायरार्की हमेशा याद रखना. ऑलवेज रिमेंबर दिस हायरार्की. टेबल के अंदर टेबल रो के अंदर हमेशा टेबल कॉलम, ठीक है. तो लेट्स मेक अ थोड़ा सा मोर रियलिस्टिक rather than this only row column and all. You can see, एक बार मैं आपको ये भी दिखा दूं. ये ना अगर बॉर्डर सॉलिड पिक्सल रेड कुछ नहीं है, तो मैंने थोड़ी सी सीएसएस ऐड करी है. I've just added a little bit of CSS to add the border, ठीक है. In the next class only, कल की क्लास में हम CSS पढ़ेंगे, और there we will learn about all these things in very detail, ठीक है. ठीक है, अब देखो, मैंने एक टेबल के अंदर 4 रोज बनाए, देख रहे हो. रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, 3 रोज बनाए हैं बेसिकली. there are 3 rows. Row 1, all the things in all these row 1, in all the each rows I have multiple columns. In fact, it is not necessarily that. अब देखो column, what we generally assume कि this is a row, suppose this is row and this is column. In each time there will be equal columns, ठीक है. If there are n number of rows and there are m columns, we consider it as a matrix where number of columns in each row will be uniform, but this is not the case here. I can delete also. I can actually delete. I can delete from here also, ठीक है. I can delete from here also, देख रहे हो. I can delete the entire row. कुछ रो में बचा ही नहीं, तो वो पेज कोलैप्स हो जाएगा. But I can have one. ठीक है. This is one of the things. This is one of the things. A quick check. कि anyone have any doubts till this point? हाँ युवराज, पूछ सकते हो. ऑलवेज यार, कभी मैं डाउट्स के लिए मना नहीं करता हूँ. या श्योर, इतना तो तुम्हारा हक है. मतलब तुम्हारा इन द सेंस सबका हक है. गुड. ठीक है जी. नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड, नाउ लेट्स मेक ना थोड़ा सा एक रियलिस्टिक टेबल बनाते हैं. लेट्स मेक अ रियलिस्टिक टेबल. तो let me just have this rows. Yeah, let me just have these rows and tell me a realistic table, how a realistic table would be. Name, class, roll number, class timetable तो बनाऊंगा ही. उसके लिए थोड़ा सा रो स्पैम एंड कॉलम स्पैम बताना पड़ेगा, ठीक है. ठीक है. I've got an idea. At the end of the class, can you repeat iframe concept? ठीक है Devanjana, I'll do that Devanjana, don't worry, I'll do that.
ठीक है, तो लेट्स मेक grocery yeah td I would be say name. ठीक है, name, ठीक है, that would be name, and then I have a name here as the first thing would be ki, let's say td vikash Vikash. Then I have here Devanjana, Devangan. Yeah, Devangana. I had a classmate. I had actually two classmates जिनके नाम दोनों का देवांगना था. तो इस देवांजना Devangana Devanjana. Then I have maybe one another TR, another TD. Here किसका नाम लेते हैं प्रियांशु. TH tag या अभी वही चीज सिखाना चाहता हूँ. प्रियांशु PRIYANSHU प्रियांशु. Then सिद्धू TD not TD TR. अब यार पूरे क्लास का नाम लिखवा लोगे क्या ऐसे? नेक्स्ट एग्जांपल में तुम्हारा भी राज TD SIDDHU सिद्धू. ठीक है, and then we have subjects in the first row. I have, like, I would say subjects TD as maths. ठीक है, table data maths. Then I have table data, I would say bio. ठीक है, table data PHYSICS physics. ठीक है, table data COMPUTER computer SCIENC computer science. ठीक है, here it is. Cool. Now Vikash got, मैं बना रहा तो मैं खुद को अच्छे नंबर ही दूंगा. TD I got मैथ्स में तो मेरे अच्छे ही थे, हमेशा 95 प्लस ही आए हैं. 95 दे देता हूँ. बायो में मुश्किल से पास किया है कभी भी, तो 35 दे देता हूँ. फिजिक्स मेरा फेवरेट, क्लास 12th में बोर्ड में मेरे 94 थे. कंप्यूटर साइंस गुड, ऑलवेज 95. It depends upon the length attribute. It depends upon the length of the word. ठीक है, अब देखो देवांजना मैथ्स कितना दूं देवांजना? हाउ मच यू गॉट मैथ इन योर मैथ्स? 92 श्योर? 92 good. How much you got in bio? 74 good. Physics 62. यार फिजिक्स तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, सब्जेक्ट है, मजा आता था मेरे को तो पढ़ने में. कंप्यूटर साइंस चलो मैं दे देता हूँ, कंप्यूटर साइंस में 80 नंबर. ठीक है, प्रियांशु को भी यही सेम नंबर मिला. एंड सिद्धू थोड़ा सा अच्छा नहीं है, तो सिद्धू गॉट इन मैथ्स 37 नंबर. इन बायो ही गॉट 55. इन फिजिक्स ठीक है, थोड़ा सा ही दे देते हैं नंबर दया करके, 70. कंप्यूटर साइंस में मेरा सब्जेक्ट है, अच्छा नंबर नहीं है, अभी अच्छा मेहनत नहीं कर रहा है, तो 58.
ठीक है, तो देखो एक अच्छा सा टेबल हमने बना लिया, ठीक है, प्यारा सा टेबल हमारा लग रहा है। बट यार ना ऐसा रियल लाइफ में, इन रियल लाइफ वी डू नॉट हैव दैट मच, अपॉलॉजीज फॉर हिंदी, इन रियल लाइफ वी डू नॉट हैव टेबल्स लाइक दिस, ठीक है। These maths, physics, chemistry and all these things are like little bit of a heading type, ठीक है, they are more highlighted. So what we can do instead of using this table data now, we can just use here th. Now can you see it becomes a heading? All the things, just go and add heading, add heading, add heading, add heading, add heading. ठीक है, here names are like maybe ki the other part. It is not compulsory that you have to place all the things, all the items in a row heading. You can maybe add only one, ठीक है. Here you just go and add heading. अच्छा, किसी ने बहुत कूल चीज नोटिस करी है अभी तक? Have you any one of you have noticed a very cool thing? It is possible to write in color. Yes, Sidhu, it is possible. It is possible. Yes. Text is aligning at the center. Yes, 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 yes. Yeah. Since it is a heading, heading is always in the center. Kind of. You can say kind of. Yes. Okay. So this is a very simple table that you can make. There are still some topics left that we will discuss right away only. कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, टेबल का बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं. Please tighten your seat belts. We are going to learn a very important concept of table, and by that table will end. उसके बाद कुछ बचेगा नहीं. It is basically very simple. How to say this? चलो यार ये टेबल को बंद करते हैं. Let's start a new table. ठीक है, देखो ऐसा था. तो पहले ये गया पेन स्टैम्प, ये ठीक है. देखो कई बार क्या होता है, कई बार फॉर एग्जाम्पल मेरे को, आई वांट टू एक्चुअली टीच यू रो स्पैन एंड कॉल स्पैन. रो स्पैन and call span, but for that I need a very good attribute. ठीक है, बहुत बढ़िया. ठीक है, I got this. Let's copy the entire table, the previous table. ठीक है, and मजा आएगा. इसी को थोड़ा सा छेड़छाड़ करेंगे अभी इसी में, and we will learn table. We have another table here. Okay, I have not given the border and all, so we are into 150. Sorry, 15. Sure. 15. ठीक है, इतना हटा दो, इतना भी काफी. Yes, Yuvraj. Yes, you are right. थोड़ा बहुत ठीक है, और maybe I'll just give a border, BORDER,
अच्छा मैं गलत जगह पे दे रहा हूँ. I have to give it inside border 1 pixel SOLID solid GREEN green. ठीक है. क्या हो गया? सॉलिड ग्रीन ले नहीं रहा. कुछ मैंने गलती किया क्या? सॉलिड ग्रीन पता नहीं यार. लीव इट. आ रहा है ना. अब देखो. द थिंग इज कि देखो. हियर दिस इज द नेम. हियर दिस इज द नेम. ऑल द नेम्स. यहाँ पे पता नहीं चल रहा कि नेम किस साइड है. देयर इज नेम इन विच साइड एंड द सब्जेक्ट्स इन विच साइड. ठीक है. दीज आर द सब्जेक्ट्स. what I want right now is I would say let me just let me take a good example where to add name and columns. I'm adding columns now. And then each row these things will be as a new column. देखो. let's first draw a rough scenario की बनाना क्या चाहता हूं मैं. then you will get the idea. मैं कुछ बनाना ऐसा चाहता हूं. there I will write NAME in name. ठीक है. first then here your names will be here. Here I will write subjects. ठीक है. and then here your subjects will be there. and then a normal timetable. just a normal timetable. ठीक है. So let me just think where I can add this name. If I would do ROW spam equals 3. Five. Yeah. And then I'll explain this. Don't worry, I'll explain this. मैं बस एक बार इसको ये कर रहा हूँ, attach कर रहा हूँ. और there would be another name maths bio. वो spam तो इधर हो गया. TH is subjects. All span equal 4. All span equal 5. नीचे कैसे आएगा? I need to put it in other rows, in another row. Because and row span 4 ही रखते हैं. How many rows are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So there will be 6. Columns are 1, 2, 3, 4, 5. 4. Bio, physics, computer science, maths is getting overlapped. Maths को कैसे सही करें? Basically I would need a blank space there.
I would need to add a th. Okay. And then I can add here 5. ठीक है पड़ता है There are some network issues. So we're discussing rows and columns. Okay, that's what we were discussing. Five columns, right? Kaisa Shanta, bro? Leave it, leave it, leave it, leave it, leave it, leave it. तो ये आ रहा ठीक है तो बेसिकली sometime what you need ना sometime what you need अच्छा एक इसका एक छोटा सा पहले देखते हैं maybe come at the very first this would become very tough. Now suppose this Devangana didn't study physics at all. Physics at all. Here, nothing. Right? And what I can do is just go here and add false and equal to 2. Sir, it is still lagging, sir.
Just wait for some time. I think so. I will came Okay. now. Hi. Hello, everyone. There was a power cut. There was a power cut. All of a sudden, and just had to reconnect again. ठीक है. ऐसा all हो गया. कोई नहीं. Let's move to this. Yeah. And then we had this. So yeah, see, the thing is, when I did a call span, what it did, it actually went over call span, means column will in the column section, it will span over the column. Okay. Screen not visible. Screen is not visible for everyone. Screen is not visible for everyone. Or can you see the screen? Can you all see the screen? No. Visible. Discord की visible हो रही है. अच्छा, maybe I've just shared a particular screen or may not desktop. Is it visible now? Is it visible? Yes. Okay. ठीक है. देखो, बहुत ध्यान से देखो. Simply means call span means it will span over the, मतलब it will ऐसे कह लो extend. ठीक है. A right word would be, to word use would be, it will extend over the column. अब क्या कह रहे हैं, देखो, करंट कॉलम से 2 कॉलम एक्सटेंड कर जाओ. ठीक है. तो ये देखो, मैंने 74 पे लगाया था. It just took space of 2 columns. Basically, instead of 1 column, it take a space of 2 column. In the case, suppose Priyanshu didn't study the math subject, and okay, yeah, Priyanshu suppose didn't study the math subject. ठीक है. ऐसा रहा कुछ प्रियांशु के लिए. टेबल डेटा मैं गलत मिटा रहा हूँ क्या कुछ. क्लास के करस्पॉन्डिंग 74 आ जाएगा. ठीक है. मिटा तो किधर से मिट गया. ठीक है. I'll go and add row spam to Debanjana 92. Row spam. ठीक है. यही चीज एक्जेक्टली मैं शो करना था. या now when I added a row span, it just extended over the row. When you add the row span, it extend over the row. ठीक है. That is how it is done. Row span and call span. As simple as it is. ठीक है जी. Is it all clear to everyone? Is it all clear to everyone? ठीक है. आज के लिए इतना ही. If you have any question, I'm open to that. EOD, I didn't understand, Krishna. Explain. Acha, once iframe. Acha, yeah. Iframe. Yes.
ठीक है यार, देखो आओ कृष्णा, देख लो एक बार आई फ्रेम। यार देखो आई फ्रेम ना बेसिकली क्या करता है, सिंपल देखो, सिंपल ऐसे, it will just create a section, it will just create a section in your page, ठीक है, और a kind of frame। ऐसे देखो खिड़की है, एक खिड़की है, let's give a very very realistic example in life, ठीक है, you have a window, it just make a window, इस विंडो से तुम पूरी दुनिया देख सकते हो, ठीक है, you can see another world from this window, ठीक है, like that। ठीक है, Sir, please Any other upload the question? notes after this class, sir. ठीक है, मैं इसको अभी 10 से 15 मिनट में अपलोड कर दे रहा हूँ, इसमें ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है, Okay, fine, 10 sir. से 15 मिनट, 10 से 15 मिनट में भेज दूंगा। आई वुड हाईली रिकमेंड कि प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दो, मतलब जो जो सीख रहे हो अप्लाई बिल्डिंग यूजिंग दैट, ठीक है। युवराज, ठीक है यार, जो भी Sir, what was the tips about the resume? अबाउट द, As you said that resume. समझा नहीं यार, Resume. रेज्यूमे रेज्यूमे Ah, yes, रेज्यूमे, yes. आज ने अपना रेज्यूमे HTML से बनाया था, आई वाज सेइंग अबाउट दैट। Anyone who is not in the WhatsApp group, text me on WhatsApp. I'll send your number in the group. Anyone will add you in that group. ठीक है? I've sent my number. ठीक है जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। Just whoever is not there, just ping me on WhatsApp. I'll share your number in the group and they will add you. Some of them would add you. ठीक है जी, चलो, bye bye, take care. Yuvraj, you can share your screen. People want to see that code, that resume, in case. Okay, sir. Okay. I'll allow sharing. Yeah, sharing screen is allowed. Yeah, okay, that's good. Sidhu has already visible? posted. Yes, yes, it's visible. Okay, sir. Sir, it's my resume. This is the resume. Basically, the resume से फर्क नहीं पड़ रहा क्या है क्या नहीं है, leave it. All the thing is कि युवराज ने कुछ चीज पढ़ा, ठीक है, युवराज ने 2-3 चीजें पढ़ी, उसके बाद ना he just went on and applying those skills and he has Sir, made his project. I think we can use their NBSP into a number, right? यार वो हो नहीं रहा था, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा था, but leave it. Okay, fine. And देख रहे हो इसकी मेहनत देखो, इसे पता नहीं था वैसा कोई शॉर्ट ट्रिक, इसने इतनी बार NBSP लिख के हर बार चेक करा है। For Yes, that sir. I have really a very high respect for him. Thank you, sir. सर लेकिन आज की पूरी क्लास खराब हो गई। आज की पूरी क्लास ना मेरी खराब हो गई एक्चुअली। मैं लगभग 15 टाइम्स में बार-बार रिकनेक्ट हुआ हूँ सर। अराउंड 15 टाइम्स। कोई नहीं यार, मेरा भी नेट स्टेबल नहीं है, मैं घर आया हुआ हूँ, घर पे नेट स्टेबल नहीं है, मैं आज ही वाईफाई भी लगवाया सर और पता नहीं आज हुआ नेट क्या, स्टेबल आज नहीं है, मेरी पूरा वाईफाई भी क्लास। स्टेबल नहीं है। सर मैं समझ सकता हूँ, होप जल्दी ठीक होंगे आप इट्स लोगों ओके, का। इट्स ओके, इट्स ओके, ठीक है, चलो कोई नहीं, लिव इट। सर मेरा एक क्वेश्चन था हाँ हाँ, लास्ट। पूछो। सर स्क्रीन शेयर कर दूं? कर लो भाई, कर लो।
सर मैं लीव कर सकता हूँ? हाँ कर लो कोई नहीं। गुड नाइट सर। गुड नाइट गुड सर विजिबल है स्क्रीन? नाइट। अभी विजिबल नहीं, अब विजिबल है, हाँ बताओ। सर यहाँ पे जो YouTube वीडियो ऐड किया था तो ये प्ले नहीं हो हाँ रहा है हाँ, सर, मतलब तो क्या प्रॉब्लम आया है? जस्ट प्ले सेकंड में नहीं कोड हो रहा है, सारे प्ले नहीं हो रहे क्या? बता। सर सिर्फ ये वाला। यार तो वो वीडियो के तुमने जो कॉपी किया होगा ना लिंक, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई होगी। एक एक सेकंड दो सर, वर्ड्स इधर उधर हो गए होंगे। खुल भी नहीं रहा है वो। ओके सर, वो एम्बेडेड वाला ये करने का है क्या सर? उस पे मतलब राइट हाँ हाँ, क्लिक करके एम्बेडेड, वीडियो को। उसमें एम्बेडेड लिंक भेजना होगा तभी वो चलेगा। ओके सर। बिना एम्बेडेड लिंक के वो नहीं चलेगा। सर ये देखिए यहाँ पे लास्ट वाला टैग वीडियो क्लास, मैंने हाँ यहाँ पे हाँ, मतलब नहीं उसकी ये आईडी सोर्स भी दिया। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, एम्बेडेड भेजना पड़ेगा। सर यहाँ पे एम्बेडेड वाला ही ना, यहाँ पे देखिए ना, अ, एम्बेड वाला। यार आई फ्रेम एम्बेडेड मतलब आई फ्रेम। आई फ्रेम में करने के बाद भी नहीं हो रहा था सर, मतलब वो। आई फ्रेम कॉपी करके लाओ। ये यहाँ पे ही कर दूं क्या सर, कॉपी वीडियो पेस्ट? पे जाओ, वीडियो पे जाओ, मेन वीडियो पे जाओ। जस्ट अ सेकेंड। यूट्यूब खोलो। हाँ सर, स्क्रीन विजिबल है ना आपको? हाँ हाँ हाँ, विजिबल है। कोई जस्ट सा भी वीडियो हटवा लो, कोई सा भी वीडियो उठा लो। सर अभी इस पे राइट क्लिक और फिर कॉपी द नहीं नहीं एम्बेडेड नहीं, वहां कोड। जाओ नीचे, थोड़ा सा स्क्रॉल करो, थोड़ा सा स्क्रॉल करो। हाँ यहाँ पे। हेलो सर। शेयर के ऑप्शन पे जाओ, शेयर के ऑप्शन। शेयर। हाँ एम्बेडेड ये वाला। कंट्रोल सी। सर ये देखिए। हाय, यार हो भी क्लास में? हाँ हूँ ना सर। ये देखिए सर। हाँ जी दिखाओ। हेलो सर, आवाज आ यार रही है? तुम्हारी स्क्रीन मुझे, हाँ हाँ आ रही है आ रही है। हाँ हाँ, ये देखिए सर वीडियो। अ, यार मुझे तुम्हारी आवाज तो आ रही है, पर तुम्हारी ना स्क्रीन बहुत लैग होके चल रही, बहुत ज्यादा लैग होके चल रही है। ओके सर, फिर कल कल के लेक्चर में। कल यार एक बार तुम वीडियोस पे जाओ ना, वीडियोस पे जाओ। सर एक्चुअली क्या हो रहा है ना सर, आपके साइड से नेट लैग हो रहा है, मतलब यहाँ पे फुल स्पीड पे चल रहा है सर। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। देखो मैं बता देता हूँ, सुनो सुनो सुनो, देखो एक बार मैं ही खोल के दिखा देता हूँ कि क्या करना होता है। ओके। ठीक है, सिंपली यूट्यूब वीडियोस पे जाओ, स्क्रॉल करो। ठीक है, मान लो ये गाना का मेरे को लेना है। ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इधर जाओ शेयर पे, व्हेन यू हाँ क्लिक ऑन द शेयर, व्हेन यू विल क्लिक ऑन द शेयर, देयर यू हैव एम्बेडेड।
go and copy the entire thing. Go and copy the entire thing. ठीक है, आ जाओ अपने HTML पे लगाते हैं, और मैं यहाँ हूँ, यहाँ सुनते हैं अपने HTML पेज पे. जस्ट गो एंड कॉपी दिस. ठीक है, ये फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करना जरूरी नहीं है, मैं बस कर रहा हूँ. और अच्छा, मैंने कंट्रोल्स नहीं दिए थे उसमें. कंट्रोल्स तो था ही भाई. रुक जाओ, अभी पेज पूरा लोड नहीं हुआ है, नेट स्लो चल रहा है. द पेज इज स्टिल लोडिंग. सर मतलब जब मैंने किया ना वो, तो वहां पे आ रहा है वीडियो, पर वीडियो इज अनेबल ऐसे दिखा रहा है. यार नेट की वजह से नहीं लोड ले रहा है, क्योंकि पेज इज स्टिल लोडिंग. ठीक है, तो अपने पहले कुछ क्वेश्चंस, कुछ वेब पेजेस बनाए थे एम्बेडेड लिंक पे. फॉर्म्स, आई फ्रेम्स. अच्छा, ये आई फ्रेम यहाँ पे चला, मैं गलत पेज पे नहीं देख रहे हो. यहाँ हाँ हाँ हाँ. इधर भी आ गया, इधर भी मैंने खोला था. मैं यहाँ हूँ, यहाँ. तो थोड़ा सा वेब पेज स्लो चल रहा था, और कुछ नहीं. ठीक है, देख रहे हो. ओके. ठीक है जी, जी सर, समझ गए. थैंक यू सर. हाँ हाँ सर, समझ गए. और किसी का कोई डाउट है? भैया कल क्लास की टाइमिंग यही रहेगी सेम? हाँ यार, मतलब 9 से 8 से 11 रहेगी. मतलब ये तो अभी तो मैं एक्स्ट्रा बस तुम्हारे डाउट्स एंटरटेन कर रहा हूँ. क्लास तो 11 बजे खत्म हो गई. ओके ओके. ठीक है, और किसी का कोई सवाल तो नहीं है? श्योर श्योर श्योर. कोई डाउट है तो पूछ लो. कृष्णा, कोई डाउट है तो पूछ लो. सर लाइव स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं. हेलो सर. हेलो. यस प्रियांशु, बनाओ, रेज्यूमे बनाओ, हेलो. बना करके भेजो मेरे को. क्या पूछ रहा है? समवन इज आस्किंग. यार मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है, मेरे को वाकई सुनाई नहीं दे रहा है. हेलो. Yeah, you are not audible to me, Krishna. You are not audible to me. अच्छा कृष्णा, लिख दो. ओ सॉरी. ओ ओ ओ करिश्मा, करिश्मा करिश्मा करिश्मा. सॉरी 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 सॉरी. मैंने तुम्हारा जेंडर ही चेंज कर दिया. बताओ 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 करिश्मा, क्या इश्यू है, क्या डाउट है? टैग का कुछ डाउट है? एंकर टैग का डाउट? यार एंकर टैग तो बस सिंपली लिंक्स को ऐड करने का होता है. मतलब एज सच कुछ स्पेसिफिक डाउट्स है तो बता दो. चल नहीं रहा है सर. करिश्मा एक काम कर लो ना, डाउट सेशंस होते हैं, ठीक है, मतलब लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं. एक बार वहां पे दिखा लो, अगर नहीं होता है तो मैं कल क्लास में करा दूंगा. ठीक है, चलेगा? मतलब फिर लगेगा या टाइम लगेगा? एक बार दिखा लो, अगर हो जाता है तो ठीक है. ठीक है जी, चलो, बाय बाय, टेक केयर.